A large turnout today in Canton in support of Indian farmers. Metro Detroiters joined protests happening in several countries. Korea Man reports demonstrators are using their voices to send a message of solidarity. Hundreds of Indian Americans from across Metro Detroit gathered at Heritage Park in Canton today, joining peaceful protests around the world in support of farmers. 26 नवंबर को किसान जब दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था कि उनका आंदोलन राजनीति से बहुत दूर है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। जब किसान सरकार से बात करने के लिए भी पहुंचे थे, तब भी उनके साथ कोई राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं था। यहां तक कि किसानों ने यह भी कहा था कि उनके मंच से वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को भाषण देने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत बंद को 20 राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। किसान आंदोलन के समर्थन में आई ये सारी पार्टियां किसानों के हितैषी अपने आप को बताती हैं, या फिर ये पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए ऐसा कर रही हैं। ये किसानों का समर्थन है या केवल भारत का विरोध है? ये किसानों का समर्थन है या किसी भी कीमत पर मोदी का विरोध है? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इन पार्टियों को शायद किसानों से कोई लेना देना नहीं। इन्हें जो चुभ रहा है वो है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये एक बहुत शानदार मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने का। Indian farmers blocking roads in a protest against new laws are refusing to move to a government-designated venue. Thousands have been campaigning on major highways near the capital, New Delhi. The farmers say they're open to talks with the government as long as there are no preconditions. They say the new laws will hurt crop prices and their livelihoods. पंजाब के किसानों की आड़ में खालिस्तानी रोटी सेक रहे हैं, खालिस्तान के पक्ष में नारे लग रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या किसानों के बहाने खालिस्तान के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है? अंतरराष्ट्रीय साजिश हम आपसे क्यों कह रहे हैं इसे, ये भी हम आपको समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कल दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हमने जो देखा वो हैरान करने वाला था। हमें कल वहां पर एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाई दिया जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई थी और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ था। ये तस्वीर हमारे उस दावे को पुख्ता करती है जिसके मुताबिक हम इस आंदोलन को खालिस्तान समर्थकों ने हाईजैक कर लिया है, ये कह रहे हैं। हालांकि इस ट्रैक्टर पर कोई नंबर नहीं था और अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये ट्रैक्टर था किसका, इसका मालिक कौन था। लेकिन इससे इस आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री का हमारा शक जरूर पुख्ता हो जाता है। India today called in Canada's High Commissioner to complain about remarks that you made about the farmers' protests in that country. There's warnings that you've damaged relations between India and Canada. I'd like to get your response to that. Canada will always stand up for the right of peaceful protest anywhere around the world, and we're pleased to see moves towards de-escalation and dialogue. Are you worried about damaging relations between India and Canada? Canada will always stand up for the right for peaceful protest and for human rights around the world. सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए विरोधी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही है। Ladies and gentlemen, for the last 16 days we have consistently said here at the Republic Media Network that this farmers' agitation cannot be allowed to become a Shaheen Bagh type protest. Tonight there is evidence that there is an attempt to make this protest a ground for anti-India activities by using our farmers as a front. Here is the full dossier on how the left-wing Maoist sympathizers and the Tukre Brigade have been surreptitiously and stealthily been trying to take over, and then we debate. Tens of thousands of farmers have laid siege on India's capital, New Delhi. They've been protesting new farm reforms introduced by the Narendra Modi government to open up agriculture to the private sector. The backlash against the laws has united farmers in India's northwest to challenge Modi's Teflon-like grip. This is India's farmers' revolt decoded. शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एजेंडा एक्टिवेट हो गया है। भगत सिंह अंग्रेजों द्वारा लाए गए 2 काले कानूनों का विरोध कर रहे थे। हालांकि असेंबली ने इन दोनों कानूनों को खारिज कर दिया था, लेकिन उस समय भारत के वाइसरॉय ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इन्हें लागू करवा दिया था। अब आप सोचिए, जब किसी देश में लोकतंत्र का अभाव होता है तो वहां कैसे लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है और काले कानून लागू कर दिए जाते हैं। लेकिन जब उसी देश में लोकतंत्र की अति हो जाती है, आजादी की अति हो जाती है, तो उन कानूनों का विरोध शुरू हो जाता है जो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। Issues of people's interest are always discussed in the parliament, and one such issue came up in the British parliament. And this is what was in fact being discussed by British Prime Minister Boris Johnson. It appears
did not pretty much comment on the ongoing farmers' protest in India during the weekly Prime Minister's question session in the House of Commons. And this is how British Prime Ministers actually take questions that are directly addressed to them. भारत बंद किसी तरह की कोई मजबूरी है? विपक्षी दलों में तो जैसे किसान आंदोलन में मोदी सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका दिख गया है। आखिर क्यों किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना लगा रहा है विपक्ष? किसानों के कंधे से सियासी निशाना सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए विरोधी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही है। Well, it's a David versus Goliath fight over farm laws in India. That's prompting a protest movement right here in the Bay Area. KPIX5's John Ramus explains why. Protests have broken out all over the world, including here in the Bay Area, as Sikh farmers say the Indian government is trying to destroy their way of life. Local Sikhs gathered at San Francisco's Land's End to begin a car caravan to the Indian consulate. They're protesting 3 new laws that would open the government-controlled ag market to the private sector, welcoming in corporate farming. Currently, 87% of Punjabi income is derived from small farms. Now I want to show the pictures. Stone pelting, barricades overturned. There is clear and open violence. Let us have no doubt about it. There is clear and open violence. And there is clear and open political instigation. Are you prepared to take responsibility if the violence goes out of hand? Is my simple question tonight. Which among us, who among us, Ramnik Man opens the debate, who among us is willing to take responsibility if the violence goes out of hand, if the violence reaches the national capital? मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा ख़राब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज ना कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? निर्भर